My uncle actually ran a band in Dehradun called Melody because I was very fascinated by all these large posters that I saw of rock bands on magazines that we used to find in वो जो सेकेंड हैंड की किताबें मिलती थी उसके ऊपर हमें लगता था यार हमें भी ऐसा बैंड बनाना है and I started to play in a band and so that's how your music journey actually started. That's well I mean उस समय म्यूजिक जर्नी क्या होती थी हम कुमार सानू के गाने आते थे हम वो गाते थे शादियों पे so that's really what we did. It's not like we were ever able to do a rock band but we did what we have शादियों में गाओ उसमें गाओ so that's how I started. My father realized कि यार ये लड़का तो बिगड़ रहा है अब इसके साथ क्या किया जाए तो in his own old authoritarian style उन्होंने कहा भाई या तो तुम अपनी BSc पूरी करो या फिर घर छोड़ दो. Naturally मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि घर छोड़ दो. Hi friends, welcome to the Aspire and Acquire podcast. I'm your host Sandeep Suri. Join me for listening to some incredible stories about some of the best professionals from very diverse fields like combat flying, robotic surgery, dancing, tea farming, journalism, deep sea diving, and so on. These accomplished professionals are not just outstanding in their jobs, but also have unique stories to share with us. We have tried to make the show truly global by having these guests from different parts of the world. So without further ado, let's dive into the session. Hi folks, let me introduce our guest in today's episode of Aspire and Acquire, Vineet KKN. Vineet is an incredible and versatile artist. He is a filmmaker, poet, storyteller, communication consultant, voiceover artist, musician, and a TEDx speaker. Aspire and Acquire proudly welcomes you to a poetic journey that promises to stir your soul and ignite your imagination. In today's episode, we have the distinct honor of hosting a remarkable wordsmith, master of words. Vineet, whose literary prowess has been celebrated far and wide, with a pen that weaves magic and a voice that resonates with the human experience. Vineet has the remarkable ability to capture life's intricacies and infuse them into lines that touch the heart. Over the course of our conversation, we will delve deep into Vineet's creative process, exploring the inspiration behind the scenes and the themes that stir our soul. Whether you are a seasoned poetry enthusiast or a newcomer to this enchanting world, this episode promises to offer insights, inspiration, and a newfound appreciation for the art of poetry. Today, we will not only discuss Vineet's poetic journey, but also have the privilege of hearing Vineet share his own tukbandi, as he calls them, allowing us to immerse ourselves in the beauty of this craft. So without further ado, let us embark on this poetic voyage with Vineet, prepare to be inspired, moved, and transported to the realms of creativity and emotion as we celebrate the power of words with our distinguished guest. So Vineet, so there can't be a better way to start the session by starting with your childhood. We all have had twists and turns during our childhood journey. How did you manage yours as a child? Suri sahab, I grew up in a mohalla, typical refugee colonies that were created. जितने मुसलमान यहाँ से छोड़ के गए थे उनके मकान हमें मिल गए. Right. So 10-12 घरों पे एक नल वाला मोहल्ला हुआ करता था. I was lucky because my father at least invested in my education, my sister's education. So I think I went to an English school and continued to live in a Punjabi mohalla. Right. That's really, the background. Just lucky to have had the chance to go to schools like Sejo's and Dehradun and, tutored by some of the best teachers we could find. And that's really my background. I mean, from there, college and everything was in Delhi. But that's where I came from. Okay, so the college and all were in Delhi. So you moved over from Dehradun at some point in time, I guess, right? Yeah. My uncle actually ran a band in Dehradun called Melody because I was very fascinated by all these large posters that I saw of rock bands on magazines that we used to find in वो जो सेकेंड हैंड की किताबें मिलती थी उसके ऊपर हमें लगता था यार हमें भी ऐसा बैंड बनाना है
And I started to play in a band, and Oh, my so father that's how finally your decided. music journey actually started. Let's well, I Ah. mean, उस समय म्यूजिक जर्नी क्या होती थी हम कुमार सानू के गाने आते थे हम वो गाते थे शादियों पे so that's really what we did. Oh my It's God. not like we were ever able to do a rock band, but yeah, Yeah. we did what we have शादियों में गाओ उसमें गाओ. So that's how I started. My father realized कि यार ये लड़का तो बिगड़ रहा है, Ah. अब इसके साथ क्या किया जाए. तो in his own old authoritarian style उन्होंने कहा भाई या तो तुम अपनी बीएससी पूरी करो या फिर घर छोड़ दो. तो नेचुरली मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि घर छोड़ दो. ठीक है जी, मैं बाहर रह लूंगा दोस्तों के साथ. Anyway, all my friends had left there in the first year I was doing BSc, and I was miserable at science, especially Uh-huh. because my father was a PhD in chemistry. So there was this whole thing Oh. about doing the Obviously, right thing. expectations were very, very high and very different. Very, very high. Yeah. So, I finally ended up going to Delhi to do hotel management because that was the easiest course to crack at that time. मुझे लगा चल यार दिल्ली देहरादून से भागने का सबसे आसान तरीका है कि जो एग्जाम क्रैक किया वहां चले जाओ. किसको पता था? Yeah, that's what I did. Acha, acha. So hotel management, and then of course, all that gigs you have been doing, it's a very, very fascinating journey. So I just want to learn about, you have now become a communication expert, poet, social entrepreneur. So give us the linkage. Give us your views about combining your expertise as a communication expert, poet, social entrepreneur. You possess a unique perspective on the power of language and storytelling. How do you see the intersection of social entrepreneurship, poetry, and effective communication? बड़ा मतलब आसान जवाब नहीं है because what you do over 30 years can't really be said कि इनके connection. I mean, in hindsight, you can always make connections. Correct. जब आप चल रहे होते हो तब तो नहीं पता होता आप कहाँ जा रहे हो. But मेरे गुरु शायर साहब हैं अंबर साहब, वो कहते हैं मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता. मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता. तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता. क्या बात. और तो कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. साथ में वो कहते हैं भाई मेरे लिए दोस्त बस इतना ही बहुत था, मेरे लिए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकला था. तो ये दो शेर मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं लगातार खुद को याद दिलाता रहता हूँ कि यार कम्युनिकेट करना जरूरी है. बोल के दिमाग और दिल कम्युनिकेट करना जरूरी है, लेकिन ऑथेंटिकली कम्युनिकेट करना भी बहुत हाँ, that is very, very critical. Well said. ऑथेंटिकली कम्युनिकेट करना जरूरी है. बाकी कम्युनिकेट तो हम सभी कर लेते हैं. आई थिंक तो it has to strike a chord, right? हाँ, मतलब अगर आप ऑथेंटिक और आप सीधी बात करते हो, आप ज्यादा लफाजी नहीं करते, आप कहते हैं जो मैं हूँ सो हूँ, तो वो लोगों को लगने लगता है कि यार ये ना बड़ा अच्छा बोल रहा है कुछ है. मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ जैसे मैं बोलना चाहता हूँ. आप जब अपने वो खोटे उतारने शुरू कर देते हो तो लोगों को आपकी वल्नरेबिलिटी भी दिख जाती है. And they also start to see कि यार ठीक सी बात कर रहा है, मतलब he's not trying to make up anything. तो I think that might have worked. बाकी ये कहना कि आप एक्सपर्ट हो नहीं हो, ये हमें कौन डिसाइड करेगा. जो चीज बिकने लगती है वो फिर लगता है एक्सपर्ट है. I mean, honestly, when I look back, I mean, I did what came my way. Right? It's not like I was really planning anything. I sold ice cream for Nirulas. I sold shoes for Reebok. I worked for G in call centers. I then did an MBA. अब करते 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 अगर आप ट्रेनर बन गए हो तो थोड़ा आपको बोलना आ जाता है. फिर आप उसके बाद कहते हो कहाँ अप्लाई करूँ, आपकी आवाज ठीक है और थोड़ा सा आप बोल लेते हो तो आप रेडियो पे जा सकते हो. So these journeys can be mapped only when dots are joined always backwards. आगे तो हमें भी नहीं पता क्या होना क्या नहीं. Right. I think I really don't know what to say about journey कैसी रही. जो आता गया वो तुक्केबाजी होती है. The only thing is you should be able to say कि हाँ यार ये भी ट्राई करता हूँ, चल जाएगा तो ठीक है. तो I did take a few risks and some worked, some didn't work. तो आज हम यहाँ बैठे. But Vineet, ये होता है, my experiences, and especially, there are a couple of fields that we were talking about, in your space are interconnected. Entrepreneurship थोड़ी सी different है. तो, I would love to hear about that journey. That how did you get into that? Did you had some kind of inclination right from the beginning कि कुछ करना है social work, or it was more like something by accident happened? How did that come? Some मेरा तो, I mean, I told you my background. I mean, the biggest thing anybody coming from a frugal socio-economic background can do is make money. तो पहले तो ये होता है कि यार सबसे ज्यादा तनख्वाह कौन देगा. But I realized that, I mean, my first reason for jumping jobs was कि जहाँ ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वहाँ चला जाए, because I'd only seen lack of money. So I thought if I can quickly get to certain points, I think I would be able to solve the biggest problems of my life.
But I did realize that whilst I was doing all this, the trigger was always, I just didn't find working in a structured environment where you could only work within the lines. You could not, so creativity isn't just applied to art, right? Creativity is the ability to look at various ideas and say, can I apply them to my current work, and maybe I can create something better. And when you don't have that space in organizations, you tend to kind of get frustrated. यार मैं अपने बॉस को समझा रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है. तो वो मुझे लगता था कि नहीं, नेक्स्ट कंपनी में ना बॉस और भी अच्छा होगा, वहां पे मुझे वो मिलेगा जो मुझे जगह देगा, और वो होता नहीं है. I mean, out of the 7, 8, 10 jobs that I've done at various places, there were two places that I really enjoyed, and I realized those two gentlemen were really people who gave you the liberty of trying new things. So ये frustration, I think, set हो जाती है, and you realize that maybe you want to work for yourself because nobody's getting you. So my jump into social entrepreneurship, this whole move back to Dehradun, was really based on कुछ अपना करते हैं, अपने गांव के लिए करते हैं, अपने शहर के लिए करते हैं. I didn't even know what entrepreneurship is. In fact, I burned so much money and lost all my savings trying to build a business in Dehradun. But it made me 100 times happier than I was. No regrets, right? Yeah. No, you very well said. ये तो पता ही नहीं होता कि where the destiny is taking us, right? And connecting the dots at that stage in life is very, very difficult, especially for youngsters, right? People who are listening to it, Absolutely. I think it'll resonate very well with them. कि you still don't know where you're heading at times. But there are kids or there are youngsters, who can plan their lives, like anything else. But it's a difficult thing to do on a regular basis. A lot of things, do happen to you because it just happened to you, right? जी. Yeah. So how can these elements work together to create meaningful change and engage audiences on a deeper level? आप एक poet भी हो and social entrepreneur भी हो. How do you really connect the chords with people? I'm very intrigued to kind of hear, again, it just happens. I'm sure, there's a lot of thinking goes behind this. So how do you do that? मुझे इसकी साइंस तो नहीं मालूम साहब. मुझे ये पता है कि मैंने कैसे किया या मेरे साथ कैसे हुआ. Please. Also, I mean, I can't really say it happened intentionally. जैसा मैंने कहा, I believe what might have worked for me is not giving a damn and keeping it polite yet. So, you stand for certain things. You're okay with people judging you. You're okay with people saying, yaar, ye jo bol raha hai bakwas hai. You'll have to figure out that the audience is not one set of animals, right? There are various people out there. Correct. So when you start putting your stuff out, you don't know कि आपकी tribe कहाँ से मिल जाएगी. You don't even know where they are. You don't know who's going to connect with you. But you got to have the belief कि अगर मैं सच्चाई से कुछ बोलना चाह रहा हूँ और ठीक सी क्वालिटी में बोल लेता हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपकी बात सुन के लोग परेशान हो रहे हैं, तो कोई ना कोई आपके साथ जुड़ता जाता है. और दूसरा क्या है कि आई थिंक ह्यूमन suffering and our constant struggle about what is life about, what are relationships about, where are we going, these are things everyone goes through. Right. So anyone who chooses to talk about them in ways that are palatable, in ways that are easy for people to understand, in a language that everyone gets, rather than trying to prove that you're the owner of a large vocab. सरल भाषा में बात करो, सीधी बात करो, तो लोगों को ये लगने लगता है कि अरे ये मेरी जैसी बात, ये मेरे जैसा. हाँ, मतलब जो अगर लोगों को ये लगने लगे कि सर ये मेरी बात कह रहा है, हाँ, तो रिलेटेबल हो जाता है ज्यादा, राइट? Becomes more relatable. होती क्या है? Yeah, when you see yourself in somebody else's writing or art or anything else, then you say, हाँ यार ये मुझे पसंद है, I'd like to follow this person. I think that might have happened with me. मैंने भी जब लिखना शुरू किया था तमीज से, या एटलीस्ट वीडियो बना के डालने शुरू किए थे, तो मेरा आइडिया ये था यार मेरे को अच्छा लगता है लिखना, डाल के देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है, कोई देखेगा नहीं देखेगा. When you see that people are following you and they are saying यार मैं भी शायद ऐसा सोचता हूँ, then you start to say yeah, maybe I'm saying something else, maybe I should say more. फिर कारवा बनता जाता है. I think that's what might have happened. Sure. So tell us a little bit about your journey as a poet.
अगेन पैशन फॉर पोइट्री तो बहुत नज़र आती है आपकी आवाज़ में, आपकी आपकी लिखाई में, एंड एवरीवेयर. सो हाउ डिड यू एक्चुअली डिस्कवर दैट पार्ट? तो पहली बात तो ये सब कि पोइट्री में एक बहुत बड़ी और एक बहुत आई मीन आँख की इज्जत वाली हायरार्की है. तो मैं खुद को अभी पोएट अब तक बोल नहीं पाया. लोग कहते हैं कि आप पोएट हैं. मैं उनसे कहता हूँ नहीं सर, मैं तुकबंदी करता हूँ, जिस राइम जिसको मैं थोड़ा बहुत ठीक से बोल लेता हूँ, इसलिए आप मुझे पोएट कहते हैं. और जब कोई कहता है कि आप पोएट हो, मुझे एक्चुअली शक भी होने लगता है कि इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा पोएट्स को पढ़ा नहीं है. आई एम मैंने तो नहीं लाइक पढ़ा, टू बी ऑनेस्ट. या आई हैव ये आर्ट के साथ ट्रेजेडी भी है कि मेरे जैसे लोग ज्यादा पॉपुलर हैं, और जो मेरे गुरु शायर हैं अंबर साहब, जिनको मैं देख के कहता हूँ साहब पोइट्री ऐसी होनी चाहिए, नॉट. उनको कम लोग जानते हैं. और ये ट्रेजेडी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये गोविंदा की और अक्षय कुमार की और इनकी सलमान खान की मूवी ज्यादा चलती है, बट दैट डज नॉट मेक देम ग्रेट एक्टर्स. Right? They might be Sure. good looking people, or they might be appealing to masses, but masses never really know what good art is. Right? तो मैं उस पॉपुलर कैटेगरी का तुकबंदीबाज हूँ. एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट, बिकॉज मैं जिस दिन खुद को पोएट कहने लगूंगा, या मुझे लगने लगेगा साहब मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, इसका मतलब है मैंने नहीं पढ़ा. लिखा करते हैं जो पढ़ने के काबिल, लिखा करते हैं जो पढ़ने के काबिल, वो लिखने के लिए पढ़ते बहुत है. तो जब क्या आप बात है. पढ़ना शुरू कर देते हो अच्छे शायरों को, जब अच्छी पोइट्री पढ़ते हो, तो आपको ये तो एहसास हो जाता है कि साहब जो मैं पेडल कर रहा हूँ ये कमर्शियल पॉपुलर टाइप की चीजें हैं. और अ, दूसरा ये है कि जैसे ब्यूटी पेजेंट होता है ना, कि साहब ये ना, ये मोहतरमा दिखती बहुत अच्छी, लेकिन आपको ये नहीं पता वो सोचती कैसे है, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है. तो खाली दिखने पे जब आपको चीजें मिलने लगती हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी ऑड. तो मुझे जब लोग कहते थे आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैं कहता साहब इसके लिए तो मैंने कुछ भी नहीं किया. कॉलेज में सिगरेट पीता था, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी भारी हो गई हो. उसके बाद तो आई मीन इट इज जस्ट समथिंग आई हैव डन नथिंग अबाउट. So you combine the typical pageant level good looks in terms of voice to the ability to say a few things. और स्तर इतना कम है इस समय सुनने वालों का कि कुछ भी चल जाता है. तो लाइक आई एम सेइंग, मैं तो जिंगल्स बनाता था जब मैं नया नया देहरादून आया था. मेरा काम था राइमिंग करना, रेडियो के लिए छोटे छोटे 30-30 सेकंड के बनाना. अब उसी को मैं अगर 3-4 मिनट में कर दूं तो वो लगता है जैसे पता नहीं क्या लिख दिया. तो आई थिंक आई एम रियली इन दी पॉपुलर नैरेटिव स्पेस. मेरे को याद है मैंने जब शुरू शुरू में एक दो चीजें लिख के डाली, तो मैंने गलती से उसको बोल दिया कि साहब ये मैं नज्म कह रहा हूँ. और मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली कि नज्म क्या होता है, ये क्या होता है. मुझे भी लगा कि यार नज्म बोलूंगा तो बड़ी भारी सी फीलिंग है. तो एक मोहतरमा ने मुझे लखनऊ से फेसबुक पे लिखा कि साहब मैं यहाँ पे हिंदी उर्दू पढ़ाती हूँ, और जो आपने लिखा है ये नज्म नहीं है. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब क्या है, मैं इसको क्या बोलूँ, कविता बोलूँ क्या? नहीं नहीं, कविता भी नहीं है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है. शेर, उन्होंने कहा नहीं जी शेर तो बिल्कुल ही साइंटिफिक वे है उसको तो लिखने का. तो मैंने कहा मैं इसको बोलूं क्या? कहते हैं, आप ना इसको नज्म नुमा आइटम बोला करो, क्योंकि कुछ नहीं है ये. तो मैं आजकल नज्म नुमा आइटम कहता हूँ. आई एम फाइन विद दैट. आई मीन फाइनली मेरा घर भी चलता है उससे, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोग मुझे उसके पैसे दे देते हैं. बट आई एम ऑल्सो acutely aware of where I stand amongst the greats of that, and I don't think I'm there. I haven't even scratched the surface. Yeah. Okay. Okay. So let's talk about human emotions now. How do you believe your tukbandi, so to say, can help people navigate and understand their own emotions better? Because एक emotional chord को जो आप touch करते हो, that's very very critical as a poet or as a शायर or as a tukbandar. That's a new term I've used. Apologies for being. That's absolutely right. Yeah. So how do you really touch the emotions? That's very, very critical, right? For anybody who is kind of narrating something in the form of a poem or a few words that way. Actually, I don't think I'm trying to touch their emotions. वो हो जाते हैं. और जब जब मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ इमोशनल लिखूं, किसी को पसंद नहीं आया. आई थिंक what might again be working is कि जब भी मैंने बगैर ज्यादा सोचे लिखा है, जब भी मुझे लगा है कि साहब ये बस मैं कहना चाहता हूँ रिस्पेक्टिव, किसी को पसंद आए ना आए, तो वो चल गया है. तब पीपल हैव कनेक्टेड. एंड आई फिगर्ड आउट
that over the last few years, just go and say what you feel like. If you do a feeling strongly about something and you say it with a certain amount of authenticity, then people will. Or and honestly, you got to kind of stop worrying about whether people will connect or not. Uh, So it automatically happens, you are saying. मतलब अपने आप when connection बन when जाता है. when I'm not trying to write something emotional, then it connects better because I think it kind of keeps me transparent and vulnerable and just authentic. Yeah. And when I've tried, I think I've fallen flat. So there is, I mean, I wish I could tell you कि साहब इस तरह किया जाता है. वो फिर आई थिंक बॉलीवुड में कोई जानता होगा कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है. मेरे को तो ये पता है कि साहब रात को कुछ महसूस हुआ, सुबह लिखा, उसको रिकॉर्ड किया, डाल दिया, तो ज्यादा चल जाता है. Right. मतलब मुझे खुशी तो है कि चल जाता है, लेकिन मेरे को नहीं पता साहब कि क्यों चलता है. I आई think गेस वो आपका natural flair है. I think that's the way you are. Yeah. yeah. So frankly speaking, I won't do justice to our podcast if I don't ask you to narrate a few lines. My personal favorites are Kameeze and Makan, but I would leave it. हाँ मतलब कमीजें कुछ भी, whatever. surprisingly, I mean, this is also the poem or Numa item that kind of got me a little bit of, I mean, it went around quite a bit. तो लेकिन इसका ना कॉन्टेक्स्ट समझाना बहुत जरूरी है. Please. तो हुआ ये कि मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, उनको हार्ट अटैक हो गया था एंड माय एज आर्मी ऑफिसर. फोन आया कि साहब मैं यहाँ पे हिमाचल में कहीं ऊपर एक कैंट है, वहाँ पे मैं पहुंचा. वहाँ पे तो 3-4 दिन तक जब वो किसी को हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, कहते हैं यार आप इसको लेटा के रखो, ज्यादा बात मत करना, डोंट लेट हिम मूव टू मच. तो मैं जाके बैठ गया. अब उसमें हुआ क्या कि 2-3 दिन तक जब आप साथ में बैठे हुए, and I had gone unprepared. I had no books with me, nothing else except a phone. So I kept going through my Facebook. तो अमित मुझे कहता है यार कि मुझे हार्ट अटैक हुआ तो भाई तो आ गया, but if something happens to you which is similar, do you know really who would come? I went through my entire list on Facebook, and Facebook calls them friends, right? Whatever term they've applied to it. Yeah. And I realized मेरे पास भी 2 ही लोग हैं. If really something was to happen to me, I would also be able to only go to some of these people. So anyway, that's how Kamize happened. Yeah, please. This is called Safed Kamize. एक सेकंड की मोहलत दीजिए, मैं Sure. ढूंढ रहा हूँ. तो सफेद कमीजें कुछ इस तरह है साहब कि ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी है. ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं 3 सफेद, 6 नीली, 3 पिंक, 2 हरी हैं. पर सेल लगी थी तो हम 2 कमीजें और उठा लाए. पहने ना पहने, देखने में तो खरी हैं. ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं. वैसे भी आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती. वैसे भी आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती हैं. कभी दशहरे पर 2 मिला करती थी, सारा साल पहनते थे. आजकल तो सरेआम हर रोज मिला करती है. आजकल कमीजें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती हैं. पर कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला. कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है. 3-4 बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे कभी. अब तो फेसबुक पे एक के बाद एक नया सिलसिला है. कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला. हाँ, कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए. कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए, पर पिंक वाली पार्टी में बहुत अच्छी लगती है और ग्रीन वाली फॉन पैंट के साथ तो किसका मैच कर रहे हैं, कौन सी रखें, कौन सी लौटाएं, कौन सी बांटें, कौन सी बचाएं. कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए, या चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी. चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी. कम से कम खोलो तो लगता है कमी कोई नहीं होनी चाहिए. आदमी के पास हर किस्म की कमीज होनी चाहिए. पर कमाल है ना साहब, देखिए ना, कमाल है ना साहब, देखिए ना, दिल साला उन्हीं पे आता है. और कमाल है ना साहब, देखिए ना, दिल साला उन्हीं पे आता है. 2 हो, अच्छी हो, सफेद हो, अकेले में हाथ फिर उन्हीं की तरफ जाता है. फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए. फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए. 2 हो, अच्छी हो, सफेद हो, दोस्तों में दोस्ती की कमीज होनी चाहिए. 2 हो, अच्छी हो, सफेद हो, दोस्तों में दोस्ती की तमीज होनी चाहिए. तो कह रहे थे आपके पास 2 अगर अच्छे सफेद दोस्त हैं तो उनको याद रखो अलमारी में. मतलब आपकी जो दोस्तों की अलमारी है
उसमें वो 2-3 दोस्त ही होते हैं जिनसे हम बार-बार जाके कनेक्ट करते हैं। कुछ So इस तरह होता beautifully narrated. So है। थैंक beautifully यू भाई। narrated, I must थैंक say. मैंने जब फर्स्ट टाइम सुनी थी ये, तो जी, of course I had a little bit of context around this, so I knew about, because I watched your video. So उसमें जी, अपनी context set किया था, which is very जी। important for anybody to kind of hear. So I felt it the same way, that I may have a lot of followers or हुँ, may have a lot of friends, so called within हुँ, quotes friends, हुँ। बट वो सफेद वाले फ्रेंड समेत सफेद कमीजों वाले फ्रेंड तो नहीं है. हाँ, वो आई मीन दे आर वो कम ही वेरी होते हैं। वेरी फ्यू. यू कुड प्रॉब्ली जी, जी, नेम देम, तीन चार पांच जी, बस. और वो जी, होने भी जी। उतने ही चाहिए, आई थिंक. अगर उससे कह ज्यादा है कह तो नहीं देन. सकते। हाँ, मतलब आप जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की उतनी तो होंगी ना, और हमारी ज़िंदगी में कहाँ इतना वक़्त मिलता है कि आप बहुत सारे एग्जैक्टली, लोगों में इन्वेस्टमेंट करो। तो एग्जैक्टली. जिस पे की है वो बन गए हैं, जो नहीं है मतलब बनाए जा सकते हैं, पर करेक्ट. उस इन्वेस्टमेंट का वक़्त किसके पास एब्सोल्युटली राइट. है? So let's switch gears now, and I want जी, to talk about storytelling a little bit. Storytelling जी, often requires a balance between creative expression and connecting with the audience. How do you जी। navigate this delicate balance? ये भी आपने बहुत कुछ किया है, तो it's important for the audience to really हुँ, understand this तो balance. जहाँ तक स्टोरी टेलिंग का ताल्लुक है सुनील साहब, आई थिंक कुछ तो उसमें टेक्निकल है Hmm. और कुछ कला है। तो इसको साइंटिफिकली जब आप समझोगे, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? पुरानी हिंदी है कोई एक्शन मूवी? Oh, action movie, तो I would say काला पत्थर या शोले. काला Right. काला पत्थर या शोले, चलिए। तो शोले में जय और वीरू, हमारे जो हीरो हैं, Correct. वो जेल में है। ठाकुर जाता है, वो कहता है साहब मेरे को गांव में परेशानी है, आप हमारी मदद करेंगे। अब वो है भी थोड़े गुंडाई किस्म के आदमी Correct. हैं, लेकिन Correct. स्वीट किस्म के हैं। Hmm. तो आते हैं, फिर वो लड़ाई करते हैं, फिर लड़ाई में एक दो बार घमासान होता है, कभी विलन जीत जाता है। एंड में हमारे ये दोनों जीत जाते हैं, उसमें कुछ Correct. लॉस भी होता है, वीरू मारा जाता है, whatever. Correct. Correct. Now the thing is, this is not just the story of Sholay. This is the story of every action movie that requires a hero. कोई भी एक्शन मूवी बन नहीं सकती बगैर हीरो के, तो वो टेक्निकल है। Hmm. एंड इफ यू हैड अ चांस टू लीड अ हीरो विद 1,000 फेसेस, क्या नाम है साहब का, मैं भूल गया, अभी याद आ जाएगा। तो एक हीरो की स्टोरी की एक साइकिल है। वो Hmm. एक नॉर्मल दुनिया से शुरू करता है, उसको सामने एक चैलेंज आता है, वो चैलेंज को ओवरकम करता है या करने की कोशिश करता है, उसको कोई मददगार मिलते हैं, वो मददगार की वजह से वो एक और बड़ा चैलेंज सरमाउंट करता है, और फिर वो क्या नाम है उस जगह को ठीक कर देता है। तो उसकी दुनिया जहां से शुरू होती है, जो स्टेटस को था, अब वो चेंज होके नई किस्म की दुनिया बन जाती है। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला that storytellers employ across the world in 99% of the action Hmm. films Hmm. or the heroic films. So आप मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में प्रेजेंटेशन कर रहे हो, या आप एक कविता सुना रहे हो, या आप किसी से बात कर रहे हो, इफ यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई who is the hero in your story and can you create a before and after of the action that the hero took, then storytelling becomes easier. तो ये Yes. तो इसका scientific technical aspect. I mean, there is a reason why all stories have the same kind of format, right? तो काला पत्थर में चले जाए तो भी वही है, खादान में जाते हैं, वहां पे लड़ते हैं, कुछ चीजें ठीक होती हैं, वो मिलती है, whatever, so we've kind of gotten used to it. All right. I think what I have done is I have kept my language simple. I have continued to focus on the science of storytelling, and I employ it blatantly. I keep telling people that what I do today is easily learned. भाषा मैं आपको नहीं दे सकता, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। True. अल्फाज तो आदमी को मतलब वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अदर देन दैट, स्टोरी टेलिंग इज नॉट डिफिकल्ट। if you know what this is, so that's very my narrative in terms of that. अब किस बारे में स्टोरी सुनानी है, whether you go to a circus, or whether you go to what is called a nukkad natak, or you go to a film, or you go to theater. I mean, all stories finally are built around very very simple themes. इस थीम में कोई चीज हमें जिंदगी में सॉल्व करनी पड़ती है, और वो जब सॉल्व हो जाती है, उसके बीच की सारी स्ट्रगल की स्टोरी एक अच्छी स्टोरी मानी जाती है। So that's what I've been doing. I do also teach storytelling to social organizations, and I absolutely remind them of the hero's journey, which is the circle I just described to you. Right. 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 So this brings up another question, Vineet, to my Hmm. mind. The creative journey as a storyteller can have its ups जी, and downs. We जी, all have seen it.
How do you navigate? I'm sure you also have moments, when you have your self-doubt or creative block. How do you navigate that? Are there any rituals, practices, sources of inspiration that help you reignite your creativity and keep you moving forward? बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली सूर्य साहब. Not just for me, for anybody who's trying to be creative and who claims to be creative. पहली बात तो creativity cannot be nurtured in a stressful environment. Our mind does not, operate very well when we are asked to be creative. Absolutely. So most people, especially in creative to सारे ही होते हैं, but let's just say the artists of the world are claim to have more stake in creativity. I haven't yet come across someone who hasn't identified कि साहब मुझे इस वक्त चलते हुए, नहाते हुए, ये सोचते हुए, लेटते हुए कहीं पे मेरी एक ऐसी जोन होती है जहां पे मुझे लगता है कि साहब मेरे सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं. एंड दैट स्पेस आई थिंक everyone should be able to identify. जैसे मैं वॉक करता हूँ तो मुझे अचानक लगता है यार एक कागज होना चाहिए था यार, फटाफट कुछ लिखना है. और so those kind of things. I think for most people to stay creative is more important. All children are creative. We kind of educate them. Sir Ken Robinson कहते हैं we educate our children out of creativity. Correct. All children are born creative. लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारा कॉर्पोरेट सिस्टम इतना सख्त है कि उसमें क्रिएटिव लोगों की वैसे जगह बहुत कम होती है. विल बी लकी इफ क्रिएटिव पीपल सर्वाइव एज क्रिएटिव पीपल थ्रू दिस जर्नी. मतलब अगर आप 21-22 साल की उम्र में घुसे हैं कॉर्पोरेट में और आप इधर निकले हैं 50-55-60 की उम्र में, तब तक आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. आई मीन आपको अप्लाई करने की मोहलत मिल जाए आउट ऑफ 102% थ्रू योर लाइफ, बहुत बड़ी गनीमत है. So, as leaders, we need to recognize that everyone is creative, and can we create organizations where creativity can thrive? And as people, we need to identify when am I most creative? What am I creative about? Can I apply it to things that I do on a day-to-day basis? एक तो ये है. दूसरा ये है कि I don't think people are either creative or not creative, right? So it's a continuum. So you sometimes feel more creative, and sometimes you. So if you think of it as a continuum, जहाँ पे एक तरफ आपका angst है, where I'm not being able to do anything creative, और दूसरी तरफ आपका bliss है कि मैं साहब 100% time creativity में लगा रहा हूँ. कहीं ना कहीं हम इसके बीच में होते हैं. So if you can see yourself moving from your angst towards your bliss, कि यार मुझे थोड़ा सा मौका मिला है creativity का, चलो इसे थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, चलो. I mean, there's no competition in creativity. You can't look at someone and say, oh, I'd like to be that creative. Find your zones, find what you really enjoy, try and apply ideas in which you can. Creativity की बहुत simple definition जो मेरे हिसाब से वो तो यही है कि आपने 6 आइडिया मिलाए और उसमें से आपने कुछ ऐसा निकाला जो कि उन 6 आइडियाज में intrinsically exist नहीं करता. So you kind of created something out of other things that crossed your mind. And if you can continue to do that in anything that you're applying your life to, you're creative. And just find that zone where those ideas come and keep noting them down. And the last thing, of course, is a lot of people just don't believe that they need to put that into action. वो अपनी ideas को देखते हैं और कहते हैं कि यार अरे यार ये creativity थोड़ी creativity तो वो करता है. अब if you keep doing that, you'll never move because creativity is also a practice. Once you try something, फिर नया आता है, फिर आप बढ़ाते हो, तो कहीं ना कहीं वो सेलेबल हो जाता है. So till it is saleable का मतलब नहीं कोई पैसे देगा, saleable का मतलब कोई appreciate करे. Correct. If you're looking for appreciation and hence not throwing out stuff in the fear that you might not get it, फिर काम नहीं होगा. So keep moving. I think I don't know if I answered that question. No, you did. You did. Absolutely. जी. Yeah. Okay. Can you share with us how you started in the field of voiceover artistry? It's important for people who are listening to this. What inspired you to pursue this career? Like I said, I really find it like a beauty pageant. आवाज है तो दिखती है. तो I used to be the head of HR of a company called Travelport. और ओखला में हमारा ऑफिस था. Okay. और मैं नीचे सिगरेट पीने जाता था. सिगरेट की दुकान के बिल्कुल पीछे रेडियो मिर्ची का ऑफिस था. तो साथ में सर आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, यू शुड बी ऑन रेडियो. तो मैंने कहा चल अंदर चलते हैं. अंदर गए, वहां पे एक बड़े अच्छे शख्स बैठे थे, तापस सिंह करके, हेड ऑफ रेडियो मिर्ची एट दैट टाइम. मुझे भी नहीं पता था. आई वेंट टू द रिसेप्शन, मैंने उनको अपना कार्ड दिया. मेरे कार्ड पे लिखा हुआ होगा कुछ डायरेक्टर.
मैंने कहा साहब उनको कहना मैं उनसे मिलने आया. And he didn't know why I was there. And he was gracious enough to look at my card and come home and say, how can I help and all that. And I said, साहब मेरे को ना रेडियो पे काम करना है. तो वो थोड़ा अच्छा. सा हंसे. मैंने देखा कि यार ये ठीक ठाक सा बंदा लग रहा है, टाई लगाई दिया. Call me in, maybe trying to entertain and dissuade me कि ऐसा थोड़ी नहीं होता है. तो मैंने कहा साहब कोई तरीका है? तो सर हाँ ठीक है, आप एक अच्छा सा सैंपल बना लीजिए और अगर सैंपल आपका अच्छा होगा तो सी. मुझे लगा इसको रफ्ता करते हैं साहब. हाँ, मैं राइट कोई राइट राइट. मैं बड़े मेरे को जुनून चढ़ गया. मैंने कहा चल सैंपल बनाते हैं. तो आई थॉट थ्रू इट, आई डिड अ लिटिल रेडियो प्रोग्राम सैंपल एंड आई वेंट बैक एंड ही वाज क्वाइट अमेज्ड के साथ ये सैंपल बना के ले आया. देन ही हर्ड द सैंपल एंड ही मस्ट हैव फाउंड इट इंटरेस्टिंग. ही गेव मी अ लिटिल शो ऑन Sunday afternoon. I had gone with another colleague of mine. Seriously? Wow. And Okay. that's how my journey started. So I got my first show on Radio Mirchi. It was called Do Aur Do Paanch with Vineet and Gaurav. Gaurav मेरे उस समय colleague थे जिनको मैंने रोपिन किया. Great musician. And when was तो this? इस तरह साहब हमने this was 2005 2004-5 की बात होगी सर. Exactly साल याद नहीं है. 2004-5 में मैंने शुरू किया. जी. And as they say, rest is history. Well, as they say, the rest is one blunder after the other. कीड़ा लग जाए तो आपको लगता है अरे ये क्या कर रहा हूँ यार, वही करते हैं इससे मजा आता है. पैसे भी बर्बाद होते हैं. Okay, before I let you go, my signature question: जी. what are the unwritten rules of your gigs? You know, we all actually work in different styles and different ways, and we all wear multiple hats. जी. You know, you do so many gigs. You know, what are certain unwritten rules that people are generally not aware of that you would like to speak about? So unwritten नहीं है वैसे जो पूछता है मैं exactly यही कहता हूँ. पहली बात तो a good gig is a lot of practice. A good gig is having thought through what you're going to perform 100 times in your head and a few actual physical practices, going through your content, understanding and making it crisp enough for people to digest and yet, making sure that it's entertaining, it's something that people can take away something from. मैं थोड़ा सा बस ये ध्यान देता हूँ कि who am I going to address? If I'm talking to children versus young adults versus older people, then I should bring to them something that they can take away from. So I just don't go with the same material to everyone and present it in the same way or try and peddle the exact same medicine to everyone. Yeah, That what is- we in our corporate world call segmentation. Yeah, I mean, segmentation bhi honi chahiye, plus you should know what the positioning of your product is. Absolutely, Where it's absolutely. coming from. So I think what I do is I definitely ask whoever is organizing a gig, so to say, who am I addressing? Where do they come from? What's their background? What is it that they might be struggling with? Where in the existential cycle? एक बार जब वो पता लग जाता है, then you know what they might want to hear, or what are the struggles they might be going through, and you just present to them what connects, right? जवान लोगों को दोस्ती पे ज्यादा वो होता है, मिडिल एज में आके आपको रिश्तों पे ज्यादा फोकस होता है, और थोड़े बड़े हो जाओ तो आपको लगता है आपकी मॉर्टेलिटी में शक होने लगा है, तो भी आपको लगता है मैं कब जाऊंगा. So those are just things that you have to keep in mind. Well said. So there's no other secret to what I do. I mean, honestly, I'll just pay attention to my audience. Sure. Well, Vineet, poetry is a powerful tool for raising awareness, inspiring action, and promoting social justice. That's the transformative power of it. You are a true inspiration to a lot of people. Once again, a bunch of folks today through our show. Thanks for being with us. Thank you very much. Best of luck in your future endeavors and for traveling the roads less traveled. Cheers. Thank you. Thank you, Shivis. बहुत शुक्रिया. Thank you. In our bonus pick section this time, we have a very special recommendation pertaining to the subject of our podcast. Are you wondering where the best place is to submit your poetry online? Just like poetry itself, the answer is often complex. Finding the right home for your poetry can take a lot of time and be painful at times. After doing some research, we found a site that has a very simplified way of submitting your work. It is called Frontier Poetry. It publishes poetry on the frontiers of craft and language. The journal admires poetry that's both contemporary and classical. Frontier is especially friendly toward new and emerging poets, and it hosts several contests every year
with awards ranging from $100 to $300, making it a great poetry magazine that pays. So go ahead and wake up the artist within you, write and simply publish on www.frontierpoetry.com.